गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रिवाइविंग 1997 एथिक्स कोड इन जुडिशरी। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो एक लैंडमार्क मूव में जितने भी सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो पब्लिकली अपने एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे। ये डिसीजन फुल कोर्ट मीटिंग के बाद लिया गया है। इस डिसीजन को इसलिए लिया गया है क्योंकि लार्ज सम्स ऑफ कैश मिले थे एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज के पास, उनके रेजिडेंस के पास। तो जजेस जो है, जबकि वो लीगली रिक्वायर्ड नहीं है अपने एसेट्स को डिस्क्लोज करने के लिए, लेकिन ये फैसला लिया गया है 1997 की जो रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ जुडिशियल लाइफ की जो उन एथिक्स कोड है बेसिकली जजेस का, और जुडिशियल एथिक्स कोड है, उसके तहत ये फैसला लिया गया है। तो ये एक फ्रेमवर्क बनाना चाहता है जुडिशियल एथिक्स कोड, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का जुडिशरी में, और जजेस को कहता है कि अपने सेट्स डिक्लेयर करो सीजीआई को, और एक इन हाउस प्रोसीजर हो ताकि एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट और एथिकल वायलेशंस बाय जजेस जो है वो इंक्वायर हो सके। तो एक नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट है 16 एंट्रीज़ की, जिसमें कि अलग अलग तरह से बताया गया है कि डूज़ एंड डोंट्स कि क्या जजेस को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए जजेस को ऐसे कोई एक्शन नहीं लेने चाहिए जिससे कि पब्लिक फेथ जुडिशरी में कम हो। जजेस को कोई इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करने चाहिए या पोजीशंस नहीं होल्ड करनी चाहिए किसी क्लब या एसोसिएशन में। लॉयर्स के साथ अपना टाइज जो है वो दूर रखना चाहिए। अलूफनेस मेंटेन करनी चाहिए, कोई ऐसा केस जज नहीं करना चाहिए जिसमें उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो है वो पार्टी हों, या पॉलिटिकल इश्यूज़ पर कमेंट नहीं करना चाहिए। मीडिया इंटरव्यूज़ नहीं देना चाहिए, और जजमेंट्स ही जो है वो अपनी उनको बोलने देना चाहिए। कोई गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करने चाहिए, और अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर किसी भी कंपनी में है जो कोई केस में इन्वॉल्व है तो वो भी डिस्क्लोज़ करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन एक इन हाउस प्रोसीजर भी बनाया था जाकि जजेस के अगेंस्ट एक्ट किया जा सके जो कि इन एथिकल स्टैंडर्ड्स को वायलेट कर रहे हैं। एक 5 मेंबर कमेटी जो है वो प्रोसीजर डेवलप करती है, जिसको फॉर्मली अडॉप्ट किया गया था 1999 में। और सभी जजेस जो हैं अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी डिक्लेयर करते हैं चीफ जस्टिस को। और इनिशियली जो है इन्फॉर्मेशन जो है कॉन्फिडेंशियल रहती थी, लेकिन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जजेस जो है वो अपने एसेट्स पब्लिकली डिक्लेयर कर सकते हैं वॉलंटरी बेसिस पर। 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने रूल भी ये किया कि जजेस की जो एसेट्स की डिक्लेरेशन है वो कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है आरटीआई एक्ट के अंडर। तो जो ये जुडिशल एथिक्स कोड है, ये क्लोजली लिंक करता है और इंश्योर करता है कि जुडिशल अकाउंटेबिलिटी हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज भी किया 1995 के केस में कि एक गैप एग्जिस्ट करता है प्रूव मिसबिहेवियर में और बैड कंडक्ट में, जो कि इनकन्सिस्टेंट है विद हाई ऑफिस। 2014 में रेजोल्यूशन और इन हाउस प्रोसीजर इन्वोक किए गए थे एक वुमेन जज के, जब एक वुमेन जज ने अक्यूज़ किया था एक सिटिंग हाई कोर्ट जज को एक सेक्सुअल हरासमेंट के केस में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया फाइनल स्टेजेस में है एक मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन फॉर्मुलेट करने के, और उसको अगले 2 से 3 महीने में रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि स्पेस धीरे धीरे एक की डोमेन ऑफ वॉरफेयर बनता जा रहा है। अप्रैल 2024 में रशिया ने एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को वीटो किया था जो कि आर्म्स रेस रोकने की बात कर रहा था आउटर स्पेस में। तो रशिया डेवलप कर रहा है न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट वेपन्स। मिलिट्री यूज़ ऑफ स्पेस जो है वो ऑनगोइंग है सिंस स्पुतनिक 1957। इवन नेटो ने भी अपनी 5th ऑपरेशनल डोमेन 2019 में डिक्लेयर की। कंट्रीज़ लाइक यूएस, रशिया जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट स्पेस फोर्सेस बना चुके हैं। कोई ग्लोबल कंसेंसस भी नहीं है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पर और स्पेस में ऑफ कोर्स, तो इससे ग्रोइंग मिसट्रस्ट हो रहा है अमंग मेजर पावर्स। इंडिया भी ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल और एस्ट्रोपॉलिटिकल टेंशंस फेस कर रहा है चाइना और पाकिस्तान से। चाइना की स्पेस एडवांसमेंट्स जैसे स्पेस सिल्क रोड या पीएलए का रिस्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस एक डायरेक्ट सिक्योरिटी चैलेंजेस हमें पोज करता है। तो राइजिंग थ्रेट्स हैं जो नेसेसिटेट करते हैं रिजिलियंट स्पेस बेस्ड सिस्टम्स, और इंडिया की एक्सपेंडिंग स्पेस कैपेबिलिटीज़ डिमांड कर रही हैं क्लियर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स होने चाहिए तो ताकि सिविल, कमर्शियल और मिलिट्री स्पेस की एक्टिविटीज़ इंटीग्रेट हो सकें। तो मिलिट्री स्पेस ऑपरेशंस क्रिटिकल हैं सेफ गार्ड करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी, और वल्नरेबिलिटीज़ जो कि स्पेस बेस्ड सिस्टम्स हमें देते हैं उनको एड्रेस करने के लिए। इंडिया ऑलरेडी मेजर इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटीज़ को अधेयर करता है, जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी, रेस्क्यू एग्रीमेंट, लाइबिलिटी कन्वेंशन, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, मून एग्रीमेंट। इंडिया जो है वो इंटरजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी और डेब्री मिटिगेशन गाइडलाइंस का भी मेंबर है। तो इंडिया ने किया डेवलपमेंट किए हैं स्पेस सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए। तो मिशन शक्ति आपको याद होगा, एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट था जो इंडिया ने किया था 2019 में। उसके बाद इंडिया यूएस, रशिया और चाइना को ज्वाइन किया था।
तो इंटीग्रेटेड स्पेस सेल बनाया गया है ताकि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके। डिफेंस स्पेस एजेंसी 2018 में बनाई गई ताकि स्पेस बेस्ड मिलिट्री थ्रेट्स को एड्रेस किया जा सके। 2023 में इंडियन स्पेस पॉलिसी भी फर्स्ट फॉर्मल पॉलिसी स्पेस पॉलिसी बनाई गई, और उसके बाद 52 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फॉर डिफेंस भी जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव की इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए। GSAT-9 2017 में स्पेस डिप्लोमेसी के लिए यूज़ की गई एक साउथ एशिया सैटेलाइट। और इंडिया जो है वो स्पेस कोऑपरेशन भी कर रहा है क्वाड, फ्रांस और बाकी कंट्रीज़ के साथ। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेसोपोटामिया। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली रिसर्चर्स ने एक एक्सटेंसिव रिमार्केबली वेल प्रिजर्व सिस्टम ऑफ एंशिएंट इरिगेशन कैनाल्स डिस्कवर किया है एरिडू रीजन ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया जो है वो रीजन मिडल ईस्ट में पड़ता है, साउथ वेस्ट एशिया का ही ऑफ कोर्स पार्ट है, और ये लैंड है अराउंड द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी। पार्ट ऑफ द फर्टाइल क्रिसेंट है ये, और इसको हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अमंग द अर्लीस्ट नोन ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑन अर्थ यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। फर्टाइल वैलीज थी यहाँ पर टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बीच में, और एंशंट सिविलाइजेशंस ऑफ सुमेर, असीरिया और बेबीलोनिया यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। ह्यूमंस यहाँ पर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर चुके थे, और धीरे धीरे जो है वो राइटिंग सिस्टम भी जो है वो इमर्ज हो रहा था। क्यूनिफॉर्म नाम की जो स्क्रिप्ट है आपने देखी होगी, वो भी ओरिजिनेट यहीं से हुई थी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं INS वर्षा। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया प्रिपेयर कर रहा है ऑपरेशनलाइज करने को INS वर्षा, जो कि एक डेडिकेटेड नेवल बेस है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए। रामबेली आंध्र प्रदेश में 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगा ये। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है उनको हाउस करेगा ये सबमरीन बेस, और ये हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी जो है पार्ट है लॉन्ग प्लान प्रोजेक्ट वर्षा की, जो डिज़ाइन किया गया है सपोर्ट करने के लिए इंडिया के ग्रोइंग फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स। ये न्यू बेस जो है लोकेटेड होगा नियर कोस्टल विलेज ऑफ रामबेली। ये फीचर करेगा अंडरग्राउंड पेन्स एंड टनल्स, सिमिलर टू चाइना का जो न्यूक्लियर सबमरीन बेस है हैनान आइलैंड, वैसे ही ये भी इसकी वाटर डेप्थ जो है वो रामबेली की अलाउ करेगी कि सबमरीन एंटर और एग्जिट हो सके बिना किस सैटेलाइट्स द्वारा स्पॉट हुए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए और जो है गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज एग्रीमेंट और सर्ट इन के बीच में। तो एनालिसिस दे रहा है ये ग्रोइंग साइबर सिक्योरिटी रिस्क इन इंडिया के बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में। तो इसके क्या हाईलाइट्स हैं रिपोर्ट के? बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ और फिशिंग अटैक्स जो है वो मोर प्रिसाइज और डैमेजिंग होते जा रहे हैं। थर्ड पार्टी वेंडर्स और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो थ्रेट्स लार्ज स्केल पर आ रहे हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो हार्मोनाइजेशन की तरफ मूव हो रहे हैं, और कंप्लायंस जो है वो रिजिड एप्लीकेशन जो है उससे जो है एक स्ट्रेटजिक टूल की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। मिसकन्फिगरेशंस, ओवर प्रिविलेज्ड एक्सेस और वीक एक्सेस जो है वो वीक एक्सेस कंट्रोल जो है अभी भी जो है मोस्ट सिक्योरिटी कॉन्शियस ऑर्गेनाइजेशंस को हार्म कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ डिफेंडर्स ही नहीं, अटैकर्स द्वारा भी यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पोएम 4। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। पोएम 4 री एंटर हुआ है अर्थ के एटमॉस्फेयर में और इम्पैक्ट किया है उसके इंडियन ओशन में। पोएम 4 क्या है? PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल 4 एक स्पेस रिसर्च प्लेटफॉर्म है जो इसरो ने डेवलप किया था ताकि जो स्पेंट फोर्थ स्टेज होती है PSLV रॉकेट की उसे यूज़ किया जा सके, और एक ये ऑर्बिट कर रही है और ये एज एन ऑर्बिटिंग एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल स्पेस में। ये स्पेडएक्स मिशन का ही पार्ट था, और ये फोर्थ डिप्लॉयमेंट थी पोएम सीरीज़ की। तो पोएम 4 जो है वो 3 टाइम्स लार्जर पेलोड कैपेसिटी लेकर गया था दैन इट्स प्रीडिसेसर पोएम 3। अब इसमें कई तरह के पेलोड्स थे, जैसे वॉकिंग रोबोटिक आर्म जो कि इंच वॉर्म लाइक मोशन के लिए कैपेबल थी और इनेबल कर रही थी इंस्पेक्शन और सर्विसिंग टास्क इन स्पेस। डेब्री कैप्चर रोबोटिक मैनिपुलेटर जो कि असिस्ट कर रहा था स्पेस डेब्री कलेक्शन और मैनिपुलेशन में। फिर था ग्रेडियंट कंट्रोल रिएक्शन व्हील असेंबली जो कि एनहेंस करता है एटीट्यूड कंट्रोल और स्टेबलाइजेशन ऑफ पोएम प्लेटफॉर्म। तो पोएम 4 को लॉन्च किया गया था December 30 को लास्ट ईयर, और इसमें ट्विन स्पेडएक्स सैटेलाइट्स जो है वो 475 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर लेकर गया था ये। और पोएम 4 को डीप ऑर्बिट किया गया, रिस्टार्ट किया गया इसका इंजन, और इसको सर्कुलर ऑर्बिट एट 350 किलोमीटर्स ऑल्टीट्यूड पर लेकर आया गया 2 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ। ये स्टेज जो है पैसिवेटेड थी, मतलब लेफ़्ट ओवर फ्यूल ही जो है वो यूज़ किया गया, और ताकि
एक्सीडेंटल ब्रेकअप जो है वो प्रिवेंट किया जा सके और इंश्योर किया जा सके सेफ ऑपरेशंस इन ऑर्बिट। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्यूट प्रोमेलोसिटिक ल्यूकेमिया। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्रिस्पर बेस्ड रैपिड डायग्नोसिस ऑफ रेयर ब्लड कैंसर जो है APL, वो भी किया गया है। तो क्रिस्पर टेक्निक आपको याद होगा कि जो बेसिकली DNA को सीजर की तरह काटती है। तो APL क्या है? एक रेयर बट एग्रेसिव फॉर्म ऑफ ल्यूकीमिया, एक सब टाइप है ये AML का। कंट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% ऑफ न्यूली डायग्नोस्ड AML केसेस। ये कंडीशन अराइज होती है जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। PML और रारा नाम के जो जीन्स होते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ एबनॉर्मली फ्यूज टुगेदर हो जाते हैं, तो इस फ्यूजन से जो है सिग्निफिकेंट ड्रॉप होता है वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स में। APL पर्टिकुलरली डेंजरस हो जाता है और क्योंकि ये सडन इंटरनल ब्लीडिंग कर देता है वाइटल ऑर्गन्स में जैसे लंग्स एंड ब्रेन, और ये फेटल भी हो सकता है विद इन डेज इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो क्योर कर सकता है मोस्ट पेशेंट्स को, और टाइमली डिटेक्शन इसलिए क्रूशल रहता है। मीडियन एज जो है डायग्नोसिस की वो 34 ईयर्स है, और मेल टू फीमेल रेशियो इसमें 1.5 to 1 रेशियो 1 रहता है। कॉमन सिम्टम्स होते हैं इसमें सडन ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स एंड नोज, फैटीग, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, बोन पेन। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 3 गॉर्जेस अंटार्कटिकाए। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना ने रिसेंटली 3 गॉर्जेस अंटार्कटिकाए, एक 3.2 मीटर अपर्चर रेडियो मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप लॉन्च किया है अपने अंटार्कटिक स्टेशन जोंगशान स्टेशन में। तो ये 2 मीटर रेडियो मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप है। ये बिल्ड कर रहा है चाइना की अर्लियर अचीवमेंट्स पर, जैसे कि अंटार्कटिक सर्वे टेलीस्कोप। ये इंटरस्टेलर गैस को स्टडी करेगा, स्टार फॉर्मेशन को स्टडी करेगा, और इसको बनाया गया है ताकि ये विथस्टैंड कर सके अंटार्कटिका के एक्सट्रीम कोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स को। और भी कुछ ऑब्जर्वेटरीज हैं जो बाकी कंट्रीज़ के, जैसे इंडिया, US, चाइना, US और चाइना की जो एक ऑब्जर्वेटरीज जहाँ पर मेंशन की गई हैं इनकी लोकेशन के साथ। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is reviving 1997 ethics code in judiciary. This topic is important for your polity section. So in a landmark move, all Supreme Court judges, including the CJI, have decided to publicly declare their assets following a full court meeting held recently. This decision follows the recent discovery of large sums of cash at the residence of Delhi High Court Judge Yashwant Verma. Unlike politicians and government officials, judges are not legally required to disclose their assets, making this a significant shift towards transparency. This move reaffirms the 1997 Restatement of Values of Judicial Life. So, this 1997 Restatement of Values of Judicial Life was adopted by Supreme Court in 1997, of course, and it is aimed to create a framework for institutional accountability in the judiciary. It aimed to do so by requiring the judges to declare their assets to the CJI and by initiating an in-house procedure to inquire into allegations of misconduct or ethical violations by judges. So it is a non-exhaustive list of 16 entries outlining values to uphold and pitfalls to avoid. For example, it says that judges must avoid actions which erode public faith in judiciary. Judges must not contest elections or hold positions in clubs or associations. They must avoid close ties with lawyers and family members in the legal profession. Judges must maintain aloofness. They should avoid judging cases involving friends or relatives and refrain from commenting on political issues. They must avoid media interviews and let judgments speak for themselves. They should not accept any gifts, no speculative investments, and they should not engage in business or trade. Judges must disclose any financial interest in companies involved in cases, and they should avoid any act that may be seen as unbecoming of their office. Okay. On the same days of the values that were on the same day that these values were adopted, Supreme Court also resolved to establish an in-house procedure to act against judges accused of violating these ethical standards. A 5-member committee developed the procedure, which was formally adopted in 1999. All judges must declare assets and investments to the Chief Justice upon assuming office, and initially the information was to remain confidential. But in 2009, the Supreme Court decided that judges could declare assets publicly on a voluntary basis. In 2018, a constitution bench ruled that judges' assets declarations are not personal information under the RTI Act.
So restatement of values of judicial life and the in-house inquiry procedure are closely linked and served as tools for ensuring judicial accountability without resorting to the most stringent process of impeachment. Supreme Court also acknowledged in 1995 that there is a gap between proved misbehavior and bad conduct, which is inconsistent with high office. So these in-house procedures have also been invoked during the 2014 case where a woman judge accused a sitting high court judge of sexual harassment. Okay. So the next topic is military space doctrine. This topic is important for your security section. So Chief of Defense Staff has said that India is in the final stages of formulating a military space doctrine, and it is expected to be released within 2 to 3 months because space is becoming a key domain of warfare. In April 2024, Russia vetoed a UN Security Council resolution to prevent an arms race in outer space. This follows fears of Russia developing anti-satellite weapons, and military use of space has been ongoing since Sputnik 1957. NATO declared that space is the fifth operational domain in 2019. Countries like US and Russia have created independent space forces and formulated doctrines to secure space dominance. The failure of global consensus on responsible behaviors reflects growing mistrust among major powers. India is also facing growing geopolitical and astropolitical tensions, especially with China and Pakistan. China's space advancements, including the Space Silk Road and PLA's restructured security forces, including the aerospace and cyberspace, pose direct security challenges to us. Rising threats also necessitate resilient space-based systems, and India's expanding space capabilities also demand clear institutional frameworks to integrate civil, commercial, and military space activities. So, military space operations are important for safeguarding national security, addressing vulnerabilities of space-based systems, and tackling emerging space-based threats. So India already adheres to major international space treaties like the Outer Space Treaty, Rescue Agreement, Liability Convention, Registration Convention, Moon Agreement, and India is already a member of the Interagency Space Debris Coordination Committee and the Debris Mitigation Guidelines, which were followed by it. So India has demonstrated its space capabilities through the 2019 ASAT anti-satellite test, which was called Mission Shakti, and therefore India joined the US, Russia, and China uh, league after that test. India also already has its integrated space cell, which enhances coordination between Department of Space and Armed Forces. India has already formed its Defense Space Agency to address space-based military threats. In 2023, we also launched the first formal space policy, but after that 52 satellite constellation for defense was also approved for intelligence, surveillance, and reconnaissance. GSAT 9, that is the South Asia satellite, was also used for space diplomacy. And India is also strengthening its space cooperation with Quad, France, and other countries. So the next topic is Mesopotamia. This topic is important for your art and culture section. Researchers have recently discovered an extensive and remarkably well-preserved system of ancient irrigation canals in the Eridu region of southern Mesopotamia. Mesopotamia is located in the region which is now known as the Middle East, and it includes parts of Southwest Asia and lands around the eastern Mediterranean Sea. It is part of the Fertile Crescent, and it is among some of the earliest known human civilizations on Earth. So it is situated in the fertile valleys between the Tigris and Euphrates rivers. It was home to the ancient civilizations of Sumer, Assyria, and Babylonia. It was one of the first places where humans started practicing settled agriculture, and the earliest known writing systems, cuneiform script, originated there as well. Okay. So the next topic is INS Varsha. This topic is important for our security section. So India is preparing to operationalize INS Varsha, which is a dedicated naval base for nuclear-powered submarines on the eastern coast near Rambili in Andhra Pradesh by 2026. INS Varsha is a strategically designed submarine base to house India's nuclear-powered submarines. So this high security facility is part of the long-planned project Varsha, which is designed to support India's growing fleet of nuclear submarines and enhance uh,
survivability of its space-based, sea-based assets. Okay, so the new base will be located near the coastal village of Rambeli in Andhra Pradesh. It will feature underground pens and tunnels also to house nuclear submarines. It is similar to China's extensive nuclear submarine base at Hainan Island, and the water depth at Rambeli will also enable submarines to enter and exit the base without being spotted by satellites. The next topic is digital threat protection, digital threat report 2024. This topic is important for security and governance section. Ministry of Electronics and Information Technology has recently launched this digital threat report for the banking, financial services, and insurance sector. It is a collaborative effort of the Strategic Information Services Agreement and CERTIN. So it offers an in-depth analysis of growing cybersecurity risks in India's banking, financial services, and insurance sector. The reports has highlighted that business email compromise and phishing attacks have become more precise and damaging. There is also breach through third-party vendors and open source software, which have been introduced at large scale now. Regulatory frameworks are moving towards harmonization, transforming compliance from a rigid obligation into a strategic tool. Misconfigurations, overprivileged access, and weak access controls continue to plague even the most security-conscious organizations. And with artificial intelligence being leveraged by both defenders and attackers, the report warns of a future dominated by highly personalized, large-scale cyber attacks driven by AI technologies. The next topic is Poem 4. This topic is important for your science and tech section. So recently, Poem 4 has re-entered the Earth's atmosphere and it has made impact in the Indian Ocean. So Poem 4 is or PSLV Orbital Experiment Module 4 is a space research platform developed by ISRO, which utilizes the spent fourth stage of the PSLV rocket as an orbiting experimental module in space. It is part of the SpaceX mission and it represents the fourth deployment of Poem series. So it has a 3 times larger payload capacity than its predecessor. So there were about 24 payloads, out of which the walking robot arm, debris capture, robotic manipulator, and the gradient control reaction wheel assembly are particularly notable. So the RRMTD is capable of inchworm-like motion so as to enable inspection and servicing tasks in space. The robotic manipulator assists in space debris collection and manipulation. The RWA enhances attitude control and stabilization of the Poem platform. So Poem 4 was launched in December 2024. It also carried twin SpaceX satellites to a 475-kilometer orbit. After satellite deployment, PS4 upper stage was reconfigured from Poem 4 and it continued in a nearby orbit. So Poem 4 was then deorbited by restarting its engine and brought to a circular orbit at 350-kilometer altitude with a 2-degree inclination. This stage was passivated to prevent accidental breakup and ensure safe operations in orbit. The next topic is acute promyelocytic leukemia. This topic is important for your science and tech section and also your social issues. So CRISPR-based tests for rapid diagnosis of rare blood cancer have made promising results in APL. So APL is a rare but aggressive form of leukemia, which is a cancer affecting blood cells. APL is a subtype of acute myeloid leukemia, which contributes to approximately 10 to 15% of newly diagnosed AML cases. And this condition arises due to a genetic mutation where 2 genes fuse together abnormally. This fusion leads to a significant drop in white blood cells and platelets. APL is particularly dangerous because it can cause sudden internal bleeding in vital organs and like the lungs and brain, and it can be fatal within days if left untreated. Early diagnosis and treatment can cure most patients, making timely detection crucial. Median age of diagnosis in India is about 34 years, with a male to female ratio of 1.5 to 1. Common symptoms include sudden bleedings from gums and nose, fatigue, unexplained fever, bone pain. Okay. The next topic is 3 Gorges Antarctic Eye. This topic is important for your science and tech section. China has recently launched the 3 Gorges Antarctic Eye, which is a 3.2 meter aperture radio millimeter wave telescope at its Zhongshan station in Antarctica. So it builds upon China's earlier achievements like the Antarctic Survey telescopes. It will study the interstellar gas and star formation. It is built to withstand Antarctica's extreme cold and strong winds.
It has been developed by China's Three Gorges University and Shanghai Normal University. Apart from that, several other observatories have also been mentioned here for you to remember. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.